की रेसिपी है चिकन पकोड़ा ग्रेवी, जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। ट्राई करना और मुझे जरूर बताना। चिकन को मैंने अच्छी तरीके से साफ करके धो लिया है। यह मैंने चिकन 65 मसाला लिया है। आपको ये कोई भी स्टोर में मिल जाएगा, कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और नमक लिया है और दही। अब हमें चिकन को मैरिनेट करने के लिए 1 घंटे तक रखना है। चिकन मैरिनेट करने के लिए दही ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे नमक और मसाला। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। दो मीडियम साइज के मैंने कांदा लिया है, कोथिंबीर, अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटो की प्यूरी ली। गैस गरम करके पहले थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इस ऑयल में हमें पहले जो कांदा हमने लार्ज साइज में स्लाइसेस में कट किए थे वो फ्राई करना है। कांदे के स्लाइसेस डालेंगे। कांदे को ठंडा करने के लिए रखेंगे। और साइड में हम जो चिकन हमने मैरिनेट किया था उसको फ्राई कर लेते हैं। डीप फ्राई करना है उसको। हम तेल ऐड करेंगे डीप फ्राई के लिए। तेल गरम हो चुका है। अब हम फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें निकालते हैं। इसी तरीके से हम चिकन के सारे पीसेस डीप फ्राई करेंगे। चिकन पीसेस फ्राई हो चुके हैं। अभी हम ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। जो कांदा हमने फ्राई कर लिया था उसको मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। कांदा ज़्यादा मोटा ना हो, आप चाहिए तो उसमें पानी ऐड करके उसका बारीक पेस्ट बना लें। जैसे तेल गरम हो जाएगा हम आपके गरम मसाले डालेंगे। अब हम पिसा हुआ कांदा ऐड करेंगे।
धनिया पाउडर, नमक, मसाले हो गए, ऑयल छूटने लगा है साइड से। अब हम थोड़ा सा दही ऐड करेंगे। हम चिकन डालेंगे ग्रेवी में। अब हमारा ग्रेवी रेडी हो गया है। सर्विंग बोल में हम सर्व करते हैं इसको। हम गार्निशिंग करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।